Hello children. So in bio we are in chapter number 16, garbage in garbage out. And till now we have seen that in our daily activity a large amount of garbage is produced, and these garbages are taken by Safai Karmacharis to the landfill area. Now garbages can be mainly of two types. Let us see what are they. Group 1 means one type of garbage can be from the kitchen, like fruit, vegetable peels, waste food, tea leaves, newspaper, dry leaves, paper bags. Okay. Second type of garbage can be your cloth, polythene bags, broken glass, aluminium wrappers, old shoes, broken toys. Okay. So garbages can be categorized into many types. Basically here two things are given. Now we have to see that garbage which we are throwing out, are they environment friendly or they are havoc to the environment. For this what we will do, we will take two groups of garbage. As I said, group 1 and group 2, it is given in your book. And then what we will do, we will put this two groups of garbages into two different pits. हम लोग दो गड्ढा खोदेंगे और एक गड्ढे में ऐसे गार्बेज को रखेंगे जिसमें वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, ड्राई लीव्स, पेपर बैग्स है, और दूसरे गड्ढे में ऐसे गार्बेज को डालेंगे जिसमें एलुमिनियम रैपर्स, ग्लास का टुकड़ा, पॉलीथीन बैग्स वैसे हैं. ठीक है. एंड देन हम व्हाट वी विल डू, वी विल कवर बोथ द पिट्स. हम लोग दोनों गड्ढे को कवर कर देंगे. आफ्टर 2 to 3 days व्हाट वी विल डू, वी विल रिमूव ऊपर वाला जो लेयर हमने मिट्टी का उसको हटाएंगे, एंड वी विल सी व्हाट चेंजेस आर देयर इन बोथ द पिट्स. हम देखेंगे कि जिस गड्ढे में वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स है, what will happen, that garbage will rot and the color will change into a blackish color. And the other pit, the other hole where we have thrown the glass bottles, polythene, it is as it is, means it will not decompose. Okay. So two types of garbages will show two different types of reactions. Okay. Now means what we can conclude, if the garbage was found to rot completely and did not mix it in the soil where you sow your favorite plants, this would provide nutrient to the plant. means उस गड्ढे में जहाँ पे ड्राई लीव्स वगैरह था जो मिट्टी के साथ मिल गया है, उसमें अगर हम लोग कोई पौधा लगाते हैं, दैट प्लांट विल ग्रो इनटू अ प्रॉपर प्लांट. बट if we put plant in the other hole where there are glass bottles, aluminiums and all, we will see that the plant is not growing properly because उसको nutrients नहीं मिलेगा वो सब garbage से. means it is not environment friendly. So what we see means this experiment is telling that generally there are two types of garbages which we throw, and the municipalities, they provide two types of garbage bin. One is the blue and the other is the green. So this blue dustbin is for what? Throwing such type of materials for plastic, metals and glass. Okay. And the green is for your dry leaves, paper bags, vegetable peels, kitchen waste. Okay. So there are two different color dustbin for throwing different types of garbages. And one more, this we have seen that many people or farmers, okay, what they do, they collect the dry leaves or they collect their farm waste and put fire on them. Then what happens, the burning of the leaves, the burning of the farm products, they produce huge amount of smoke which is not good for our health. So we should not burn the garbages. Okay. Instead what we can do, many types of garbages can be used for producing manure, which is known as vermicomposting. Composting means to produce manure, and vermi means to produce manure with the help of worm. Which type of worm? Earthworm, which is also known as red worm. See, it is given here properly. The method of preparing compost with the help of redworm is called vermicomposting. मीन्स हम लोग जो कचरा फेंक रहे हैं उसमें से जो कचरा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जैसे
सब्जी का छिलका, फ्रूट का छिलका, उसको मैन्योर में, खाद में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। किसके सहारे? अर्थवॉर्म या रेडवॉर्म के सहारे। दैट इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। कंपोस्ट मीन्स मैन्योर। और मैन्योर को वर्म्स के ज़रिए, सॉरी, गार्बेज को मैन्योर, वर्म्स के ज़रिए मैन्योर में कन्वर्ट करना, दैट इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। और हाउ वी डू दैट? We will take the garbage and dig a hole in the soil, put the garbage in it, and with the garbage we will put some red worm. Okay, see this one. हम लोग मिट्टी खोदेंगे और उसमें कचरा डालेंगे। ऐसा कचरा जो मिट्टी के साथ मिल जाएगा, उसके साथ हम लोग रेड वॉर्म्स डालेंगे। एंड हाँ, क्या करेंगे? उसको थोड़े दिन छोड़ देंगे। थोड़े दिन बाद क्या होगा? वो जो भी गार्बेज है वो चेंज हो जाएगा मैन्योर में। एंड हाउ दिस इज चेंज? लेट अस सी। रेड वॉर्म्स, ओके, जो भी हम लोग केचुआ, रेड वॉर्म्स, अर्थवॉर्म डाल रहे हैं, दे नीड फूड। एंड वॉट एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट वेस्ट और दिस किचन वेस्ट वी आर गिवन, द अर्थवॉर्म eat it as a food. And as they are eating the food, what happens? The earthworm, they don't have teeth, so they have a structure called gizzard, which helps them to grind the food. मीन्स अर्थवर्म का जो है दांत नहीं होता है खाने को चबाने के लिए। वो लोग जो खाना अंदर ले रहे हैं, मिक्सी के तरह उनके बॉडी के अंदर एक ऑर्गन रहता है गिजार्ड, उसमें वो खाना ग्राइंड होता है। एंड जो खाना उन लोग को बॉडी को चाहिए वो बॉडी में रख लेता है, बाकी दे गिव इट आउट टू द सॉइल। एंड यही वेस्ट जो अर्थवर्म का है, इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल। सो दिस अर्थवर्म, दे आर ऑल्सो नोन एज दिस फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स। ओके, एंड so this way, by the help of earthworm, we can change the garbage into manure. Now, so vermicompost is an excellent way of producing manure, which is helpful in our gardens and fields also. Okay, means this is best out of waste. Whatever waste is there, we can change it into a good manure. Now, how much garbage we are throwing? Okay, we have to be very careful because every day गार्बेजेस तो घर से निकलते ही हैं, वर्क प्लेस से निकलता ही है। सो वी शुड नॉट मेक आवर एनवायरनमेंट डर्टी बाय थ्रोइंग द गार्बेज। सी हियर, ये हमारे कॉलोनी में भी तुम देखोगे, जहाँ कहीं लोग कचरा फेंक देते हैं, उससे क्या होता है? दैट इफ़ योर एनवायरनमेंट इज़ नॉट क्लीन, द प्लेस वेर यू आर लिविंग इज़ नॉट क्लीन, you're throwing the garbage around your house, what will happen? Flies and mosquitoes will breed in that place, and flies and mosquitoes will cause many types of diseases. Okay, so we should not throw garbage here and there. So how can we prevent, or how can we take care so that less amount of garbage is produced? Or we should see that whatever garbage we are throwing outside, it is not causing destruction to the environment. तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जो भी कचरा हम लोग फेंक रहे हैं, हमें देखना है कि वो हमारे वातावरण को दूषित नहीं कर। तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स सोचने चाहिए। हम लोग क्या कर सकते हैं? लाइक, instead of using polythene, we can use paper bags, because paper, they will easily get decomposed with the soil. Okay, or recycling of paper, whatever old newspaper, magazines, books, envelopes are there, we can recycle it, we can use it again. जैसे पुराना न्यूज़पेपर, हम लोग पेपर बैग्स बना सकते हैं। ओके, देन old copies, we can give it in such a place where it can be recycled again to make again new copies. Then whatever food and all packages, they should be given in paper bags instead of polythene, because polythene is a curse to our nature. पॉलीथीन अगर कहीं भी गिरा है, उसको अगर तुम जलाओ भी तो वो एनवायरनमेंट के साथ मिक्स नहीं होता है। ओके, सो इट इज़ नॉट friendly to the environment. So we should stop using the plastic bags. And when we heat this plastic, harmful gases are also given out, which is not good for our health. Then many animals, जैसे प्लास्टिक गिरा हुआ है, तो एनिमल्स जब खाने के लिए कचरे में आते हैं, तो हो सकता है खाने के साथ प्लास्टिक भी अंदर जाए, तो व्हाट विल हैपन? इट विल कॉज सफोकेशन टू द एनिमल्स, एंड द एनिमल्स में डाई ऑल्सो. So we should not throw polythene in the environment.
So how can we save our environment? See here, मेक मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग मीन्स हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना है. वी इंसिस्ट शॉपकीपर्स यूज़ पेपर बैग्स. अगर हम मार्केट जाते हैं तो शॉपकीपर को हमें बोलना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ पॉलीथिन टू गिव पेपर बैग्स. वी डू नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स. हमें अगर कुछ स्टोर करना है, कुछ चीज़ रखना है, तो हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है. वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर. वी शुड नॉट थ्रो द प्लास्टिक बैग्स here and there. We should not burn plastic bags. We should not put garbage in plastic bags and throw away. And we use vermi composting at home and deal with our kitchen waste. And जो waste environment friendly है, जैसे animal vegetable peel, fruit peel, हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग के द्वारा we should convert it into manure. We should recycle paper, okay? And वी शुड यूज़ बोथ साइड्स ऑफ पेपर. हम लोग क्या करते हैं, हमने एक पेज एक लाइन लिखा, उस पेज को छोड़ के नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं. नो, वी शुड यूज़ बोथ साइड्स ऑफ द पेपर. एंड we make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kinds of waste. And we should tell the society the proper way of throwing the garbage, कि कौन सा गार्बेज हमें कौन सा डस्टबिन में फेंकना है. जो गार्बेज रिसाइकिल हो सके वो कौन से डस्टबिन में जाना चाहिए, जो रिसाइकिल नहीं हो सके वो कौन से डस्टबिन में जाना चाहिए. दिस वे इफ़ वी आर केयरफुल we can save our environment. Okay, so this is all about the chapter about garbage in, garbage out.